Good morning, students. Today's topic is compound journal entry. When two or more than two transactions take place on the same date, in such cases, instead of passing separate entries for all such transactions, only one entry is passed. Such a journal entry is called compound entry. यानी जब दो या दो से अधिक बिजनेस ट्रांजैक्शन सेम डेट पर होती हैं और सेम नेचर की होती हैं, तो उनको अलग अलग करने की बजाय एक ही ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड किया जा सकता है। उनकी एक सेपरेट एंट्री, उनकी अलग अलग सेपरेट एंट्री, सबकी सेपरेट एंट्री करने की बजाय एक इकट्ठी एंट्री की जा सकती है। उस एंट्री को हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। यानी ऐसी एंट्री जिसमें या तो डेबिट साइड में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट होते हैं या क्रेडिट साइड में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट होते हैं, उसको कहते हैं हम कंपाउंड एंट्री। दिस एंट्री कैन बी पास बाय टू वेज। इन एंट्री को दो तरीक़ों से कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ बाय डेबिटिंग वन अकाउंट एंड क्रेडिट टू और मोर अकाउंट। यानी डेबिट में एक अकाउंट और क्रेडिट में दो से ज़्यादा अकाउंट। बाय क्रेडिट वन अकाउंट एंड डेबिट टू मोर अकाउंट, या क्रेडिट में वन अकाउंट यानी क्रेडिट में एक अकाउंट या डेबिट में दो या दो से ज़्यादा अकाउंट। एग्जांपल्स: 2017 March 26 paid salary ₹30,000 and paid rent ₹10,000. In this transaction, salary and rent both are expense, both are same nature. सो द सेपरेट एंट्री अगर हम करें अलग अलग, तो सैलरी के लिए सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, रेंट के लिए रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट कंपाउंड एंट्री, इन दिस एंट्री कैश इज द कॉमन, सो दैट सैलरी अकाउंट विल बी डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट 30,000, रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 and टू कैश अकाउंट इज द combined total 30 plus 10, that is 40. So that compound entry will be salary account debit 30,000, rent account debit 10,000 and to cash account 40,000. Here is the practical problem. यानी हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के थ्रू भी कंपाउंड एंट्री को समझ सकते हैं। पास द जर्नल एंट्रीज फॉर फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। 2019 March 5 started business with cash ₹1 lakh and stock ₹50,000। यानी बिजनेस स्टार्ट किया कैश से और स्टॉक से। March 7 परचेज गुड्स फॉर कैश ₹30,000 एंड फ्रॉम सोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। गुड्स कैश खरीदी गई 30,000 और सोहन से उधार खरीदी 10,000। March 11 रिसीव्ड कमीशन 3,000 एंड रेंट ₹2,000। कमीशन प्राप्त किया 3,000 और रेंट प्राप्त किया 2,000। हियर इज द सॉल्यूशन इन द जर्नल। फर्स्ट कॉलम इज डेट, सेकंड कॉलम इज पर्टिकुलर, थर्ड इज LF, फोर्थ इज डेबिट अमाउंट, फिफ्थ इज क्रेडिट अमाउंट। एज पर द क्वेश्चन, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डेट 2019 March 5, एंट्री cash account debit, stock account debit to capital account. In this transaction, started business with cash will be debit, stock will be debit, and as per the representative, capital is the personal account which is giver, so that it will be credit. So the entry will be cash account debit ₹1 lakh, stock ₹50,000 and to capital account ₹1,50,000. Next, second transaction, March 7, purchase goods for cash and from Sohan on credit. In this transaction, three accounts are involved: purchase account, cash account and Sohan account. As per the rule, purchase account will be debit because what comes in, यानी इसमें goods आपकी आ रही है, so that purchase account will be debit, and cash will be paid, so that it will be credit to cash account, and Sohan is the giver, so that it will also be credit. So that entry will be purchase account debit to cash account to creditor account. Purchase account debit 40,000 to cash account 30,000 to creditor 10,000. Next transaction number 3, March 11. Received commission ₹3,000 and rent ₹2,000. In this transaction, three accounts are involved: cash account, commission account, rent account. Cash account will be debit because is a real account and what comes in cash इसमें आ रहा है, so that it will be debit, cash account debit, and commission will be credit as the income, and rent is also the income, so that it will be credit. So that entry will be cash account debit 5,000 to commission 3,000 to rent 2,000. So that it is concluded that where the two or more than two accounts are involved or take place in one side, which is maybe debit or maybe credit, that is compound entry. Thanks for watching the video.